की पाठशाला जर्नी में वीक ऑन वीक दे कीप अटेंडिंग द सेशंस. ओके. तो बहुत सारे लोग खाली सीखता है, सिर्फ पैसा कमाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या मूवी की भी देखता है. तो लेट्स चेक, और ऑडियंस का जरा पोल रन करो, तो चेक करो कि कितने लोग ये आरआरआर मूवी आपने जिक्र किया, विच यू टॉक्ड अबाउट दैट आरआरआर मूवी. सो हाउ मेनी ऑफ देम वॉच दैट आरआरआर मूवी? लेट्स चेक. Because everything we can learn from, I learn a lot of things from movies, and in fact in our UFP model we make our audience almost every month we give them one movie to watch. Let's see how many of them are सिर्फ खाली पैसा ही कमाता है या मूवी भी देखता है. Whether you watch movie or not, all these movies are making 1,000, 2,000, 3,000 crores. Okay, so at least उसका भी पता रहना चाहिए what's happening. Yes, I think आशीष क्या बोलता है रिपोर्ट? Sir, 60% people have seen the movie and 40% have not. Oh, so जो नहीं देखा है तो देखने लायक है. वन ऑफ द मूवी ऑस्कर विनिंग मूवी है, तो यू शुड वॉच. एंड जिसने देखा है उन लोग के लिए मेरा क्वेश्चन है. इन जो भी नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में थ्रू अवर वेरियस एमएफपी ईएफपी यूएफपी प्रोग्राम्स में कुछ बात करते रहते हैं कि आपके लाइफ में ये होना चाहिए. ओके. तो ऐसे ये मूवी में भी दो हीरो लोग हैं, अगर आपने जिसने भी देखा है दो हीरो है, राइट? सो दोनों हीरो के लाइफ में ये होता है. वो ये क्या है? कैन यू फिल इन द बॉक्स? व्हाट इज दैट? ये यू शुड हैव दिस इन योर लाइफ टू क्रिएट हिस्ट्री, to live, to achieve whatever you are planning to achieve. What is that you should have? Aspiration, goal, vision. Yes. Attitude to win. Not attitude to win. It's about mission, vision, goal. हम बात करते रहते हैं in each and every session. Life में you should have purpose, mission, vision, right? So whoever has watched this movie, can you just give me, if you have watched, type me in the chat box. I want to get one or two audience people here before we get into the topic, because everything is learning, and today's topic is all about learning from the past. So Mengraj is this. So let's bring Mengraj. Where is Mengraj? Can you, Ashish, can you bring Mengraj on spotlight? Yes, sir. Just 1 second. Dr. Mukund Kanpure, welcome. Good to see you. Yes, Mengraj. Good Yes, evening. boss. Good evening. Good How are evening. you? Good evening. Fine, fine. Super Yes, fine. आपने मूवी देखा है ना? Yeah. या सो दोनों हीरो लोग हैं. सो दोनों हीरो में एक अपना नाम क्या है दोनों का, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, हीरो लोग का नाम? बोथ आर साउथ इंडियन मेरे ख्याल से. एक तो चलो, जूनियर हम आशीष फेमस है इसमें, आशीष को लेके आते हैं. यस, जूनियर जूनियर एनटीआर जूनियर एनटीआर सो एंड रामचरण. रामचरण. यस, एब्सोल्युटली. सो जूनियर एनटीआर एंड रामचरण. तो दोनों के पास मिशन होता है, दोनों के पास लक्ष्य होता है, दोनों के पास विजन होता है, राइट? यस यस यस. यस. रामचरण का विजन क्या रहता है या लक्ष्य क्या रहता है, गोल क्या रहता है, टारगेट क्या रहता है मूवी में? उसके फादर से इंसिडेंट हुआ था कि वो भी ऐसे ही कुछ उनको वो अचीव करना था. वहां जाके उनके आर्मी में जाके कुछ उनको उनको इम्पैक्ट करना था. वो विजन था मेरे हिसाब से. यस. सो ठीक है. सो somebody has written आर्म्स करके. और दूसरा इसका एनटीआर का, जूनियर एनटीआर का. एनटीआर अगेन ही इज द इम्पैक्टेड पर्सन. उन्होंने कुछ इनिशियल में कुछ देखा था, अपने गांव वगैरह में कुछ हुआ था, तो उनको उनसे वहां से बाहर निकालना था. आई थिंक यही था. हाँ, so I am getting the answer in the chat box. Yes. Thank you, Mengraj, for participating, and thank you all who have answered this. I am getting a lot of answer. Yes, absolutely. So अगर जो रामचरण का जो लक्ष्य था, लार्जर विजन था, राइट? एक कंट्री को फ्रीडम दिलाना, आजादी दिलाना, हर एक के हाथ में बंदूक, क्योंकि वो उसके फादर को प्रॉमिस किया रहता है या फादर ने कमिटमेंट लिया रहता है, हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में बंदूक होना चाहिए और अपने देश को आजादी मिलना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए करके. यस, लार्जर विजन, लार्जर मिशन था, बड़ा मिशन था. लेकिन जो जूनियर एनटीआर का जो मिशन था, छोटा मिशन था. लेकिन मूवी में अगर आप देखोगे
जो बड़ा मिशन वाला छोटा मिशन के सामने सरेंडर हो जाता है। हैव यू नोटिस दिस? छोटा मिशन के सामने सरेंडर हो जाता है, वो गिव अप कर देता है। इसके क्यों पता है? बिकॉज जो लार्जर मिशन वाला, जो कल क्या होने वाला है, कल क्या बदलाव लाना है, उसके बारे में था, राइट? कल का दुनिया बदलने का था। लेकिन जो जूनियर एंटर वाला, जो छोटा मिशन था, आज ऑलरेडी जो हुआ है, वो लड़की उसका दुनिया था, उसकी जो उनके कम्युनिटी का वो दुनिया था। अगर वो लड़की मिला मतलब उसके लिए वो कम्युनिटी को उनका जो इज्जत मिला। सो समटाइम्स इन लाइफ वी हैव टू सैक्रिफाइस the larger vision if to save the immediate vision also. And at the same time in movie, पूरा throughout the movie अगर आप देखोगे उस मूवी में, like you know, वो अपने ही लोगों को मारते इन द बिगिनिंग। जो बड़ा मिशन वाला है रामचरण है, अपने ही लोगों को मारता है, अपने ही लोगों को सैक्रिफाइस करता है। और उसमें भी उसने दिखाया कि अगर मुझे बड़ा लक्ष्य अचीव करना है, मुझे छोटा छोटा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, राइट? ये भी दिखाया हुआ है। So you should not forget your mission, your vision. So अगर if you are behind your vision, उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो अचीव होगा, आपका पर्पस क्लियर है, वो अचीव होगा। उसके बाद भी एंड में वापस उसका जो लार्जर विजन है अचीव होता है, उसका जो स्मॉलर विजन है वो भी अचीव होता है, जो बड़ा विजन है वो भी अचीव होता है। So how many of you have learned these things? ये वो मूवी में से है। So is it not the lesson from this? If you agree with this, type in the chat box agree. समटाइम्स हम बहुत बड़ा, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे करते हुए देखते हैं कि 1 मिलियन लोगों को करोड़पति कराना है या फाइनेंशियल फ्रीडम करवाना है, 1 करोड़ लोगों को आजादी करवाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम करवाना है। इट इज गुड, बट कभी कभी इवन वो एक पर्सन के लाइफ में भी अगर आप फोकस करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराने को, उसके बाद वो बढ़ते जाता है। यस, सुपर ग्रेट। सो दैट इज नॉट द एजेंडा ऑफ द टुडेस टॉपिक। सिंस आशीष ने उस मूवी के बारे में बात किया और हमारा टाइटल वो उसके साथ वेरी मच कोरिलेट होता है, सो दैट इज द रीजन एक थोड़ा फ्लैशबैक में लोगों को लेके गए उस मूवी में। सो होप यू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू हैव अ मिशन, विजन, गोल एंड टारगेट इन लाइफ, पर्पस इन लाइफ। Secondly, your purpose should be bigger than your life. Your purpose should be bigger than your life. That is the message. Okay, and you should go behind your purpose and mission in life to achieve that. Yes. So welcome to this session. So this is not RRR movie, it's about rewind, because it's very important. जैसे आशीष ने बताया, अगर हमको 10 कदम छलांग लगाना है, if you want to go forward 10 steps, you have to go backward 5 steps. अगर जब जाएंगे we get energy, we come to know कि what we have done right, what we have not done right. So rewind, recap. So rewind करोगे तब जाके आप recap कर पाओगे क्या सीखा उसमें से, and then we should get energy from the past. उसमें से हमको एनर्जी मिलेगा जो हमने सीखा है. That is the objective of this session. And this session we have designed in such a way, if in any of the month, if there is a 5th Thursday, we are lucky. In the month of August we have 5 Thursdays, and that is the reason you are seeing me here, and that is the reason we are having this session. And coincidentally exactly 2 months का session यहाँ पे हम summarize करें. So almost every 2 to 3 months में we are going to get one bonus Thursday in our life, and that bonus Thursday मेरे साथ होगा with RRR. Yes. So again, in all our programs हम observe करते हैं, we see many students attending, taking admission for the programs and all. So दो टाइप के दो टेक्नोलॉजी फेमस है, एक RRR, दूसरा IRR. सुना ये दोनों टर्म ना? तो RRR तो आपने सुन लिया, IRR सुना है? IRR, what is IRR? What is IRR? Type in the chat box. अरे सब फाइनेंस स्टूडेंट है, आपको पता रहना चाहिए IRR क्या है. Internal rate of return. Rohan is saying internal rate of return. Yes, everybody is saying absolutely right. IRR, internal rate of return, but we are not talking about that IRR. So दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं पाठशाला में या हमारा कोई भी प्रोग्राम्स में. एक RRR टाइप के स्टूडेंट होता है, एक IRR टाइप के स्टूडेंट होता है. So what are the RRR टाइप के स्टूडेंट? Regularly regular. They are RRR स्टूडेंट. तो उनके लिए तो सारे सेशंस अपडेट होते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो सब होते रहता है, तो बढ़िया है. लेकिन ये जो टॉपिक, ये जो सेशंस करना पड़ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं
they have paid the fees for the Pathshala Pro membership and still they are not attending the class. They are called irregularly regular. मतलब वो irregularity को regularly follow कर रहे हैं. कभी बीच बीच में ऐसे कोई गेस्ट मूड आया, अच्छा लगा चेहरा किसी का, आ जाएंगे, नहीं तो वो मिस होते रहता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. अगर आप आरआरआर भी है तो भी इसका सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है, बिकॉज वॉट एवर वी हैव लर्न इन द पास्ट 2 months वी आर गोइंग टू रिकैप, रिवाइंड, रिकैप एंड ऑल्सो जो अगर आप आईआरआर वाला भी है, आप लोग के लिए भी थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा इस सेशन से. Okay, so that is the objective of this special session that we have, this special segment that we have created called RRR, rewind, recap and recharge. So is it good? Should we continue to do this session? RRR का करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Every 2 to 3 months अगर Thursday अगर आता है तो अगर करना चाहिए तो type in the chat box should do. Awesome. Yes. Awesome. So in our Pathshala segment, every week, maybe almost every week, except 1 or 2 weeks, we don't keep the Charcha segment in the Pathshala. So almost every week we have this Charcha segment, and that is the objective of the Charcha segment is to give you update about our industry. हमारा industry में क्या हो रहा है? SEBI का क्या नया circular आया? AMFI का क्या नया circular आया? IRDA का क्या नया circular आया है? RBI का क्या नया circular है जो which will impact us? So anything that is happening in the economy which will impact our business, our clients, our portfolio, our investments, तो वो न्यूज को हम यहाँ पे लेके आके in this चर्चा segment we analyze the news and we discuss about the news so that you should be aware what's happening in the industry. If client asks you ये क्या है, you should know ये क्या है. और अगर if something important that need to be action to be like KYC change, all those things keep coming, so you should immediately take that action. If you don't take that action, it can also cause stoppage of your brokerage. Definitely आप लोग सब अपना brokerage report मंगवाओ और analyze करो. At least 1 to 2% brokerage आपका at least अगर आपका 1000 client है, कम से कम 10, 15, 20 client का brokerage आपको नहीं मिलता रहेगा, या 10, 15, 20 पोलियो का नहीं मिलता रहेगा. आप लोग ने वो भी analyze नहीं किया होगा, because there are many reasons why you will not get the brokerage. So that is the reason you should have the updates. And today what they are talking about the gift city. Friends, if you focus सिर्फ खाली 100 एनआरआई क्लाइंट ढूंढना है, आपका 100 करोड़ का ईवीएम अपने आप हो जाएगा, 1 साल में कर सकते हो. क्यों? बिकॉज मिनिमम टिकट साइज $100,000 या $125,000 का है. एंड इतने सारे केवाईसी इधर इंडिया में करना पड़ता है, वहां पे कुछ नहीं करना है. नो टीडीएस इंपैक्ट, नो केवाईसी इंपैक्ट, बिग टिकट साइज, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए उनका इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट लगता है. एंड आपका if see what you focus, that's what you get. So if you focus that I want to at least get one client या one focus on 1 or 2 clients every month for gift city, आपका maybe within 1 year. Uma Devi, it's already there, we have in the Pathshala NRI का वो session already है. Don't worry, we will cover that also. Okay. So 1 or 2 clients लेके आने का टारगेट करो गिफ्ट सिटी वाला प्रोडक्ट्स में. गेट कनेक्ट विद द, जैसे आदित्य बिरला ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, एसबीआई ने किया है, रिलायंस ने किया, और भी प्रेम सर ने कुछ 1-2 एएमसी बताया, और बाकी एएमसी अगर नहीं है दे आर गोइंग टू कम. गेट कनेक्ट विद दम. छोटा छोटा करने के बदले में आपको 10 क्लाइंट लेके आना पड़ेगा 10-10 लाख का, यहाँ पे एक क्लाइंट 1 करोड़ का. यस, गिफ्ट सिटी मिनिमम टिकट साइज एज ऑफ नो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें जो है $100,000 to $125,000 का है मिनिमम. ओके, सो दैट मीन्स 1 करोड़ रुपए का टिकट साइज. अच्छा है ना? 1 करोड़ का टिकट साइज, एंड देयर आर मेनी पीपल टू गिव यू दैट मनी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. विच फंड्स आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट? अभी जो अवेलेबल है ऑप्शन उसमें जाइए सर. बेसिकली वो डाइवर्सिफाइड इक्विटीज लेके पीएमएस काम करते हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करता है, और इवन अदर मार्केट्स में भी, ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो लोग. सो ईच फंड हैज द डिफरेंट फीचर्स. So connect with the respective AMC, they will give you उनका फंड का कंपोजिशन क्या है, उनका फंड किधर इन्वेस्ट करने वाले वो बताएंगे. ओके, फीचर्स क्या है. बट आइडिया ये है कि ये गिफ्ट सिटी फंड जो लेके आया है, अगर आपको एचएनआई डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इफ यू वांट टू बिकम एचएनआई डिस्ट्रीब्यूटर, इफ यू वांट टू टारगेट एचएनआई कस्टमर, एनआरआई कस्टमर, एंड पता है आप गोरे लोगों का भी पैसा लेके आ सकते हैं इसमें. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. इंडिया में रह के गोरे लोगों का भी पैसा इसमें लेके आ सकते. That is the beauty, so इसलिए focus on that.
Now let's go ahead with our learnings. So key lessons from all the financial Pathshala. So friends, we started this. This is the 8th edition of Financial Pathshala. We started our first session of the 8th edition on 4th July. 4th July we have started the first edition of the Financial Pathshala of the 8th edition. 8 साल से हम ये पाठशाला सेशन कर रहे हैं every Thursday. पहला initial 2-3 years we used to do offline, monthly once, then उसके बाद fortnightly once we used to do, and then weekly once we started doing physical event. But since that time COVID 2020, every week almost hardly 1 or 2 sessions we missed due to some festival, important festival, where we have even those festivals also we have done. Okay, so almost every year in the last if you see 2020 से लेके अभी तक, so 2021 22 23 3 years, almost 150, we have done more than 200 plus sessions, offline and online put together, 200 plus sessions every Thursday we keep doing this. So the first session of this 8th edition of Financial Pathshala, जो भी ज्वाइन किया है उन लोग के लिए हमने फर्स्ट सेशन किया on 4th July 2024. And anyone remember whom we have invited? किसी को याद है? Who was the speaker? Anybody remembers? Arshad Shah, good to see you after a long time. Dr. Arshad Shah, welcome. We have many people, हमारे old friends, बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहा है. Yes, नितिन भाई, Ask Real Estate Fund CEO. ना तो ये IRR वाला आंसर है या RRR वाला आंसर है? ये समझ में आ रहा है, IRR वाला आंसर है, RR वाला नहीं है ये. Pramod Mishra. Okay. So the first speaker on 4th July whom we invited was Ajit Menon from PGIM Investments, right? So he was the speaker. Beautiful session. He has shared some interesting lessons. 10 lessons from the global advisor, जो successful advisor India and global में, जो सक्सेसफुल एडवाइजर है वो लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग क्या फोकस करते हैं और हमको क्या फोकस करना चाहिए. So he discussed about those areas. So these are the some of the topics that he has covered. Industry evolution, कैसे like industry evolution में he mentioned about one thing, when distribution is the king, when the distribution is dominant, when distribution का जो business अगर distribution के ऊपर dependent है, okay, then distribution is the king. Distribution is the king. उसके बाद जब मार्केट में वो बिजनेस थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, जब लोग अवेयर हो जाता है, लाइक इन आवर बिजनेस, अभी तक इससे पहला इन द पास्ट डिस्ट्रीब्यूटर वाज द की प्लेइंग द की रोल, अभी भी प्ले करेंगे, बट अभी म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सब एडवर्टाइजमेंट कर करके नाउ प्रोडक्ट इज बिकम द किंग. Now, अभी किसी को प्रोडक्ट समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है. Even if you are not there, they will buy it. So product is the king. And then उसके बाद जब प्रोडक्ट भी बहुत ये होते जाते हैं, उसके बाद बन जाते हैं ब्रांड. ओके, सो ये डिस्कस्ड अबाउट यू हैव टू फोकस, आप कौन सा स्टेज में है, अब कौन किंग है, वेदर इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट, वेदर इट्स अ ब्रांड. So that's the transition. So you discuss about the evolution, how कैसे कोई भी प्रोडक्ट में कैसे evolve होते हैं. इनिशियली डिस्ट्रीब्यूशन किंग रहता है, उसके बाद प्रोडक्ट किंग बनता है, उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट में ब्रांड. ओके, ब्रांड इज द किंग. यस, सो नेक्स्ट we also discussed about he discussed about the birth and evolution of the investment products and investment theories. Many जो development that has happened, taken place in our industry, in our this investment universe, like the first time this investment जो concept है, war bonds जो issue किया गया है यूएसए में in 1917, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुआ है, देखिए एफिशिएंट मार्केट थ्योरी वो, या शार्प वाला जो विलियम्स जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो, ये जो आप सुनते हो, ये सारी चीजें, ऑल दिस डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस. नाउ जो अभी जो करेंटली जो मेन जो रूल कर रहे हैं वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. ओके, सो दैट ही डिस्कस अबाउट द एवरी ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कौन सा उस समय में क्या प्रोडक्ट्स, क्या कौन से कंपनीज, कौन से एवोल्यूशन हुआ उस स्टेज में. ही डिस्कस्ड अबाउट दैट एंटायर स्टेज. सो व्हाई आई एम गिविंग यू द समरी. if you are IRR or if you are कभी never attended NRI, तो आप पाठशाला, आप जो प्रीवियस जो सेशन से रिकॉर्डिंग है हमारा,
आपका लॉगिन आप ज्वाइन ले लीजिए, ज्वाइन करके, अगर आपके लॉगिन नहीं है तो लेके वॉच दिस रिकॉर्डिंग, यू मस्ट वॉच दिस सेशन, देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स। इनफैक्ट मैंने उस दिन 3-4 पेजेस का नोट्स बनाया था इसे उनके सेशन से, 2-3 बार देखना चाहिए। इनफैक्ट आज मैं उनके पूरा वो नोट्स भी रिवाइज किया आप लोग के साथ बात करने के लिए। ओके, सो more important, what are the 10 best lessons from global advisors what he mentioned in that session? First one, जो सक्सेसफुल एडवाइजर्स है, ग्लोबल एडवाइजर्स है, सक्सेसफुल एडवाइजर्स है, दे फोकस ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, नॉट द रिटर्न्स। सो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ना चाहिए, उसमें फोकस करो, बिकॉज रिटर्न्स इज नॉट इन योर हैंड। रिटर्न का फ्लक्चुएशन होता रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑन द रिटर्न्स, यू हैव द कंट्रोल ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। So focus on the number of units, number of shares, number of quantity, not on the returns. This is the first point, the first lessons what he has discussed in that session. Second lesson he discussed, focus on risk management versus returns. In market, let me tell you, let me ask you this question. आप लोग टाइप करो चैट बॉक्स में, क्या आपका कोई भी क्लाइंट जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच एवर क्लाइंट इन्वेस्ट द मनी, क्या आपके पास जब आते हैं मुझे रिस्क दो करके आपके पास आता है? Do they come to the investment or do they come to you for risk? कोई क्लाइंट है जो मुझे रिस्क चाहिए करके आता है आपके पास? नो ना, nobody comes for the risk, everybody comes for the return. बट क्या मार्केट में सिर्फ खाली रिटर्न ही है? Is it only return? This is a big difference, my friend. This is where our role is required. We have to explain. When people come to the investment, they come only with the expectation of the return. Sir, we don't promise return, we don't focus on return, we focus on risk management. Because if you manage the risk well, then return is a byproduct. So risk, returns comes at the cost of the risk, isn't it? But no client, no investor come to you that give me the risk. और नो इन्वेस्टर कम्स इन द मार्केट, जब आते समय वो कभी रिस्क है करके आते ही नहीं। आज के तारीख में तो एट दिस लेवल ऑफ मार्केट उनको कभी लगता ही नहीं कि रिस्क कुछ है करके। अगर हमने हाइब्रिड में रखा है या लार्ज कैप में रखा है, इसमें क्यों रखा है? वो स्मॉल कैप में 70% CAGR है, 40% CAGR है, व्हाई यू आर नॉट इन्वेस्टेड माय मनी ओवर देयर? ये क्लाइंट जब शुरुआत में व्हेन वी स्टार्टेड द करियर जर्नी इन्वेस्टमेंट, उसको मुझे ABCD समझाना पड़ता था। सर रिस्क होते हैं, ये होते हैं, डूब गए तो डूब गए तो डूब गए तो। सी हाउ द माइंडसेट हैज चेंज्ड। हुआ है कि नहीं? ये हो रहा है आजकल, जो जिस वर्ल्ड में उस वर्ल्ड में हो रहे हैं। ये हाइब्रिड में क्यों पैसा है मेरा, ये डेट में क्यों पैसा है मेरा? नाउ ही इज क्वेश्चनिंग आवर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, जो क्लाइंट के लिए जो प्लानिंग करता है। सो दैट इज द रीजन. What is important? This is the biggest lesson. Don't focus on the return. Client comes to you with the focus of return only. You need to show him the risk also. If you do this job well, my friend, if you do this job well, then you never ever have to worry about the client. जब भी मार्केट ऊपर नीचे उससे कोई चिंता नहीं होगा. Your clients are informed and educated. So you don't have to, हम लोग जाके सब पास रिटर्न, ये रिटर्न, वो रिटर्न समझाते रहते हैं, उसके बदले में उसको समझाओ कि रिस्क कैसा होता है. ओके, फोकस ऑन द रिस्क. यस, वी आर रिस्क मैनेजर. नेक्स्ट, फोकस ऑन सेविंग्स ग्रोथ रेट वर्सेस रिटर्न्स. सेविंग्स ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? हम लोग रेट ऑफ रिटर्न कितना ईयर ऑन ईयर बढ़ा करके हम देखते रहता है, लेकिन वो सर वहां पे उन्होंने बताया उस सेशन में कि हर साल आपने सेविंग्स रेट कितने से बढ़ाया. लास्ट ईयर आपका इनकम का 10% आप इन्वेस्ट करते तो इस साल में उसको 15 किया है, 20 किया है. फोकस ऑन द सेविंग्स ग्रोथ रेट, नॉट ऑन द रिटर्न. यस, स्टेप अप SIP. नेक्स्ट, फोकस ऑन रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क वर्सेस बेंचमार्क रिटर्न. सब लोग, क्लाइंट लोग, सब लोग, सब जगह पे हम लोग बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, बेंचमार्क के साथ. फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द क्लाइंट फॉर एवरी व्हाट इज द रिटर्न पर यूनिट ऑफ द रिस्क दैट फंड हैज टेकन, दैट फंड मैनेजर हैज टेकन. ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. इफ दे आर आस्किंग फॉर
40%, 50%, 60%, and explain the concept of return per unit of risk of small cap fund versus return per unit of risk of flexi cap या multi cap fund. Client will understand this concept. It's not कितना आपने रिटर्न कमाया, लेकिन क्या रिस्क लेके कमाया. बिकॉज जब 100 रुपीज जब 50% करेक्शन होते हैं ना मार्केट, व्हेन 100 से जब 50% करेक्शन होता है, इट कम्स टू 50. बट फ्रॉम 50 अगेन इफ आई हैव टू गो बैक टू द 100, you know what is the percentage of return required? 100% return, 100% growth is required. So इतना नहीं है कितना फास्ट भाग रहे हो, जब गिरोगे कितना गिरोगे, क्योंकि जितना ज्यादा गिरोगे वहां से आने को ज्यादा टाइम लगेगा. नेक्स्ट, you should be everything to someone. Like when you you should be everything to someone and someone to everyone. इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था. When you start your career in this business, when you start in the beginning of this business, okay, you are someone to everybody. You are someone to everybody. मतलब जितने छोटे क्लाइंट आने दो, बड़ा क्लाइंट आने दो, स्मॉल क्लाइंट आने दो, मीडियम क्लाइंट आने दो, सबको एड्रेस करोगे. लेकिन ग्रेजुअली व्हेन यू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ 50, 100, 200, 500,000 crores, now you will not be able to cater to everyone. You cannot follow the same strategy. You have to have a client segmentation. आप किस सेगमेंट में काम करना चाहते हो उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा, because then you will not be able to do the justice with the जो बड़ा 80% of your client, your 20% clients are giving you 80% revenue. Your 80% clients are going to give you or giving you only 20% revenue. So for that you need a client segmentation. So you should be everything to someone. कौन? ये आपका जो 20% क्लाइंट्स के लिए. You should be everything. Any financial matters, you are the only person. And for everybody, you should be someone. वो उस पे मतलब focus on becoming everything to someone, few people. Then focusing on, instead of focusing on someone to everyone. I hope you understood this concept. नहीं है, go and watch that recording. Next, embrace the collaborations versus competitions. अपने जो कलीग्स है, अपने जो फ्रेंड्स है, वहां पे आप कंपटीशन के नजर से मत सोचो. The future is all about the collaborations. And we are the live living example. I myself have collaborated with the 3-4 partners, 3-4 MFDs, and Dharam sir also collaborated with the 3 MFDs. We are the living example. And in fact हम लोग 18, 19, 20 अक्टूबर को एक बर्ड करके बिजनेस इमर्शन डिस्कवरी रिट्रीट करके, बिजनेस इमर्शन रिकवरी रिट्रीट करके एक हम लोग एक 4 days 3 nights का एक इवेंट कर रहे हैं बैंगलोर में, with only selected people, not more than 50 people exclusively, जहां पे ये स्ट्रेटेजी सब डिस्कस करने वाले. अगर आप कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम. इट्स नॉट इजी. कोलैबोरेशन इज लाइक यू आर मैरिंग टू द लाइफ, यू आर मैरिंग विद दैट पर्सन फॉर लाइफ टाइम. Okay, so what are the things that you should know, or you should exercise, you should follow, you should check before you collaborate? And let me tell you friends, future 5 years down the line, if you are retail, जो जिस तरह जो आज इंडस्ट्री ओपन अप हुआ है, जो ARN इजीली शिफ्ट हो सकता है, ARN चेंज कर सकता है, ब्रोकर चेंज कर सकता है. आजकल ऑलरेडी बैंक्स बने इसको मेन, ICICI बैंक, मेनी बैंक्स ऑलरेडी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस. आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रात को सोए थे, सुबह जाने से पहले आपके ये दूसरे दिन AUM रिडम्पशन दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में. क्यों? ब्रोकर चेंज हो गया. और क्लाइंट जब करते हैं उसको पता भी नहीं चलेगा, उनके सामने कुछ वो नाच के ये करके वो करके दे विल शो समथिंग और दिस ऑन दैट. मेरे साथ, मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है. उन्होंने जब वो ICICI बैंक वाले आया है और ये सर आपको ये बेनिफिट देगा, वो बेनिफिट, खाली आप ये आपके जो इन्वेस्टमेंट्स का ये चेंज करना है, मतलब खाली ये करो करके साइन लेके गए. बट क्लाइंट वाज नॉट इंटेंडेड टू डू दैट. नाउ ही इज अगेन ट्रांसफरिंग बैक टू मी. बट फ्रेंड्स, ये होने वाला है. 2023 तक ये नहीं हो रहा था.
2024 में ये हो रहा है और 2025, 26, 27, 28, 29 में इसका मात्र बढ़ने वाला है, बिकॉज बैंक्स के पास पावर है, बैंक के पास पैसा है, बैंक के पास सिस्टम है, उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, खाली बटन दबाने से शिफ्ट हो जाते हैं, फॉर्म भी जरूरत नहीं है, डीमैट टू डीमैट बटन दबा के शिफ्ट करवा के लिए है। हम लोग को शिफ्ट कराने के, फॉर अस टू शिफ्ट द चेंज द ब्रोकर, वी हैव टू डू लॉट ऑफ लेग वर्क. They have that kind of, they're now only business model abhi easily. We have done 20, we have put in 20, 15, 20 years to build this the clients and make this client reach this level. एक दिन में ऐसे जा रहा है, एक दिन में जा रहा है, एंड ये बहुत बढ़ने वाला है. आप एक्सेप्ट करो नहीं करो, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, ऐसा होने वाला है. आप कितना भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये होगा. बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? आर यू डाइवर्सिफाइंग योर बिजनेस? इफ दैट इज सो, अगर डायरेक्ट प्लान्स का अगर ये हो रहा है, और पता है आईसीआईसीआई बैंक ने पूरा डायरेक्ट प्लान का एक टीम बनाया हुआ है 150-200 लोगों का. अब सामने से लोग कॉल करके बताया, सर आप रेगुलर में क्यों इन्वेस्ट किया है डायरेक्ट, मतलब वो आईसीआईसीआई बैंक कर रहे करके नहीं बोल रहा हूं, कॉल जा रहा है, ग्रो ऐप, ये वो ऐप, वो ऐप, सर आप डायरेक्ट रेगुलर में क्यों रखा है, पता है आपको इतना नुकसान हो रहा है. अब लोगों को क्या है, फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा पिंच करता है. अग्री? 10 लाख का प्रॉफिट करके दिया, इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 लाख उसको लॉस एक्सपेंसेस जा रहा है बोलेगा ना, उसको ज्यादा पिंच करता है. अरे हाँ वो बता, फिर मेरे को पैसा बचेगा तो मैं क्यों नहीं करूं. इफ यू आर नॉट हैविंग सब्सटैंशियल वैल्यू टू योर क्लाइंट, मेरे केस में मेरा क्लाइंट को मैं सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड कर रहा हूं, इसलिए इज रेडी टू कम बैक टू मी. बट व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू हैव? आर यू डूइंग रेगुलर रिव्यू मीटिंग विथ योर क्लाइंट्स? एंड डू यू हैव द रेगुलर रिव्यू मीटिंग का प्रोसेस है क्या, कैलेंडर है क्या, एजेंडा है क्या? फ्रेंड्स, if you do not adapt, if you do not change with the time what's happening, and अभी भी ऑस्ट्रिच माइंडसेट में अगर आप बैठ, ऑस्ट्रिच माइंडसेट में बैठा है, लेट मी टेल यू, द फ्यूचर इज स्कैरी. एंड इनफैक्ट हम सिर्फ कोलैबोरेशन नहीं किया है, हम जो बहुत सारे टीम, ऑलरेडी टुडे नाउ वी आर ऑलमोस्ट 15-17 पीपल टीम विद सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, एवरीथिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए. Not only that, we are thinking about now RIA के बारे में. अगर डायरेक्ट प्लान है तो why not, हम लोग के पास भी होगा. जब क्लाइंट आएगा हम सामने से बताएंगे, सर वी हैव बोथ द ऑप्शन, विच वन वुड यू लाइक टू गो, डायरेक्ट, रेगुलर, डायरेक्ट पे फीस ऑप्शन, इनडायरेक्ट फीस ऑप्शन, टेल मी विच वन यू वांट टू गो. फॉर दैट you need to become RIA. Again, we are going to discuss about this in that retreat, but we can't take everybody, only a few selected people, only 50 people we can take in that event. Already many people have signed up. You can, if you are interested, some of you, but if you are big in size, you can think about coming for this event. It will be worth attending this event. We are thinking, we are going to discuss about the RIA. RIA बनने के लिए क्या लगता है, कैसे करना है, क्या करना है. We are going to discuss about the next जो इन्वेस्टमेंट बास्केट, जो HNI जो डिमांड करता है, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स है, वो कैसे ऑफर करना है, क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सो प्रोडक्ट्स के एरिया में आपका मार्केट के ऊपर कैसे फोकस करना है, कौन से मार्केट में फोकस करना है, कौन से प्रोडक्ट्स में फोकस करना है, कौन से क्लाइंट में फोकस करना है, क्या प्रोसेस पे फोकस करना है. दिस आर ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट. फ्यूचर के लिए आप कैसे रेडी रहना है. तो डोंट टेक एनी एक्शन टुडे फॉर द टुडे. What's happening today? Any action that you take today, my friend, should be for tomorrow. 5 years down the line आप कहाँ पे होना चाहते हो, 10 years down the line कहाँ पे देखना चाहते हो, उसके लिए क्या चाहिए वो एक्शन आज लो, आज लेना चाहिए. So this already we are practically doing, and we are going to share corporation क्यों करना चाहिए, branding क्यों करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, all these things that we are going to discuss. Okay, yeah. So moving forward, this is very important. Focusing on embrace the collaborations, don't treat the other person as a competition. See if there is anything collaboration can happen. किस तरह collaboration हो सकता है, because when 1 + 1 comes together, it becomes 11, not 2. That is the power of collaboration. Dharam sir बोलते रहते हैं beautifully, like one person with 300 crores, there is another company, one person with one CEO, one mutual fund distributor with 300 crores, another company
same 300 crores with 3 CEOs, with 3 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. अगर ये आईपीओ आपके सामने आता है, आप कौन सा कंपनी में पैसा डालोगे? वन कंपनी, वन सीईओs, वन एमएफडी, और same 300 crores with 3 CEOs. That is what we are talking about future collaborations. That is the future. Large scale economy. जो बड़ा है वही टिकेगा, जो बड़ा बनेगा वही टिकेगा. या तो खुद बड़ा बनाओ या साथ में मिलके बड़े बनो. एंड हमने खुद प्रैक्टिकली वी हैव टेकन ऑल द बुलेट्स फर्स्ट. जैसे वो रामचरण या वो एनटीआर जो बुलेट लेता है ना, पहला पहला हमने बुलेट खाया है. हमको पता है उसका तकलीफ क्या होता है. एक इंडिविजुअल से कॉर्पोरेटेशन में ईवीएम शिफ्ट करने के लिए क्या तकलीफ हुआ है, 3-3, 6-6 महीने का, 4 महीने का. क्या सही तरीका था, क्या गलत तरीके था. जो एमफी के पास भी डायरेक्ट किसी को कॉल करेगा तो आंसर नहीं रहता है. वो आंसर हमको पता है क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कर चुके एक्सपेरिमेंट. जैसे अपने इधर विकास बोलते रहते हैं कि इधर ठोकर खा के सीखो या ठाकुरों से सीखो. हम यहाँ बैठे हैं ठाकुर, सीखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. All right, so embrace the collaboration versus competition. This is the next lesson. Focus on beating the inflation and focus on the goal, not beating the market benchmark. Friends, बहुत सारा 11 MFD story of 1100 crore, the real story on next level side. Yes, true. Yeah. So what was the point? मेहुल जी के पॉइंट के ऊपर मैं कुछ और सोचने शुरू कर दिया. तो लेट मी कम बैक टू द पॉइंट. क्या था वो? फोकस ऑन बीटिंग द इन्फ्लेशन. या जब क्लाइंट का पता है, क्लाइंट रिटर्न करता रहता है, रिटर्न करता रहता है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे. बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखो, दे आर नॉट बीटिंग द बेंचमार्क. कभी बैठ के देखो, जिस दिन क्लाइंट पूछेगा ना, आपके पास आंसर होना चाहिए. व्हाट इज योर आंसर? इट इज प्रूवन ना. Now in this kind of market it's very difficult to beat the benchmark. हर फंड मैनेजर बोलते हैं कि मेरा फोकस रहता है बेंचमार्क को बीट करना. आपका ये लैंग्वेज नहीं होना चाहिए. What is our benchmark? Not the Nifty Sensex. Our benchmark is the client's goal. Sir, मुझे benchmark, we don't follow the benchmark. We follow your life benchmark. आपका लाइफ का बेंचमार्क बताओ क्या है, उसको हम मैच करते हैं. As long as I'm matching your life requirements, your goals, I have done my work as your advisor, your distributor, your well-wisher. So goals versus Nifty Sensex. So goals, inflation should be your benchmark. Beating that, meeting that, not the benchmark. Sensex or Nifty. Are you all here? यहाँ पे हो ना? I hope I am making sense what I'm talking. So next, financial freedom versus retirement concept. Research इन्होंने में बहुत beautifully बताया. ये research suggests people invest for happy outcomes and not boring outcomes. People invest for happy outcomes and not boring outcomes. जब आप रिटायरमेंट का बोलोगे ना, अरे 30 साल के बाद, 40 इयर्स के बाद कौन जिंदा रहेगा? इट इज नॉट अ रिटायरमेंट, इज नॉट अ हैप्पी आउटकम. किसको अच्छा लगता है रिटायरमेंट वर्ड सुनना? दैट वर्ड इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड. नोबडी लाइक्स. इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं करता है, स्टे इन्वेस्टेड नहीं रहता है उसमें. लेकिन वही उनका बच्चों का एजुकेशन फंड से वो विड्रॉ करते हैं क्या? मैरिज फंड से विड्रॉ करते नहीं, बिकॉज वो हैप्पी आउटकम्स है. वहां से ईएम जाते रहता है, वो हैप्पी आउटकम्स है. सो इसीलिए, बट रिटायरमेंट के एक ही गोल है जिसपे बहुत लंबा तक ये ईएम रुक सकता है. बट रिटायरमेंट वर्ड एलर्जी है. सो रिप्लेस विद द हैप्पी आउटकम वर्ड. फायर, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, कॉर्पस. डोंट यूज द बोरिंग words. So people will stay invested for happy outcomes. So now you're talking, your language has to change.
Okay, your language has to change. Educate your clients to focus on MSIs versus single income. What is MSI? What is MSI? इन्होंने इनफैक्ट उस सेशन के बाद हमने इवन अपना रिकॉर्डिंग में भी अपलोड किया हुआ है. Yes, multiple streams of income. Friends, let me tell you, if you go to even 2 lakh rupees person income, he's got 1.5 lakh EMI only. 50,000 में क्या खाएगा, क्या घर के लिए देगा, क्या खुद के लिए खर्चा करेगा, क्या इन्वेस्ट करेगा. सो विद एग्जिस्टिंग इनकम दे विल नॉट बी एबल टू अचीव जो आप सो कॉल्ड जो फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं ना, वो जाके 65 साल में अचीव करेगा. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट if you achieve that financial freedom at 65 70? If you want your client to fire matlab financially independent, become retire early, then the only way is educate your client to focus on creating multiple streams of income, and today it is possible. There are many options available. If you are talented, if you have skill, if you have interest, if you have passion, your job should not be just, sir, ये application दो, ये transaction दो, ये SIP दे दो, ये lump sum दे दो, equity दे दो, debt दे दो, hybrid दे दो. If you are limited to that, friends, you are only a transactional advisor. If you want to have the complete wallet of the client, complete control on the client's wealth, you need to become a transformational advisor. How else, other than investments, how else you can add value in the client's life? Focus on that. If you don't have the talent, if you don't have the resources, if you don't have the system, find people who can do that, who can give that. And we are doing everything. We are already created that. So for that is the reason, अगर आपके कोई क्लाइंट को मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कमाना है, हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट फ्रीडम लाइफ एक्स कंपनी. वो क्या है, प्राइवेटली बात करेंगे. दिस इज नॉट फॉर पब्लिक. You can also give opportunity to your clients to earn income and make your client your business partner, not just a client. Think about all these ideas, and everything that we say, my friend, we actually do first. And probably we are the only others जो भी करते रहेंगे पता नहीं, जो प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ पे आके सिखाते हैं. कितने लोग अग्री करते हो? इफ यू अग्री, टाइप इन द चैट बॉक्स. बाकी सब ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग करवाता है. वी आर द ओनली पीपल जो प्रैक्टिस करते हैं, वो हम यहाँ पे बात करते हैं. सुपर, ऑसम, थैंक यू. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन्होंने भी मेंशन किया, रिन्यू, रिचार्ज, बट नेवर रिटायर. फॉर अप्लीकेबल टू यू एंड अप्लीकेबल टू योर क्लाइंट्स. कभी रिटायर नहीं होना है. The day when you retire, you are retiring, you are counting your days. Dayabai, look at Dayabai just 27 years, अभी 28 हो गए होंगे. कितना नहीं, अभी कितना हो गया Dayabai? 26 है अभी 26 है खाली. 26 है, बाकी है इतना. 62 है, 62 है, 26 बाकी है. 26 बाकी है. ओ माय गॉड, आप लोग का गणित करते हो ना, 100 माइनस रिवर्स. लुक एट हिज एनर्जी लेवल. He attends each, and in fact he is coming to Bangalore also already. अभी रिसेंटली पूरा उन्होंने ऑफिस रिनोवेशन किया हुआ है. कितना जो टीम मेंबर उन्होंने रखा हुआ एट दिस स्टेज. He is the living case study. He is the living case study, because why I mention every time I mention about him. If God gives me that energy and उतना देगा तो उनका एज में मैं इसी टाइप के बैठना चाहता हूँ. दयाबा, I want to आपके जैसा रहना चाहता हूँ आपके एज में. I have learned from you, sir. You are our mentor. Yes. So we have, this is the renew, recharge, and that is the reason I am here in this session. I told you recharge. मैं आज आपको रिचार्ज करके भेजूंगा, एंड ये रिचार्ज मेंटेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आओगे वापस अगेन, यू विल ये सब आपको याद रहेगा. एंड फोकस ऑन हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. So these are the few lessons, or some of lessons what in that session Ajit Menon sir has covered. I hope I have tried to cover some of those points आप लोग को बताने के लिए. याद दिलाए. अगर आपको और डिटेल्स में समझना है, उनका पूरा 1.5 hour का जो सेशन है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है पाठशाला में. आप अगर पाठशाला मेंबर है
आपके पास उसका एक्सेस है, प्लीज गो बैक once again, watch it. That's my recommendation. Okay, all right, so next, after that, next session on 11th July we did this, we have this every second week, every second Thursday of the first Thursday we call the industry expert, AMC से या इकोनॉमी से जो रिलेटेड जो बात करेगा मार्केट के, SIP we call, who talks about the industry, जो मार्केट के ऊपर EMI कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो बात करेगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट वीक. एवरी फर्स्ट वीक वी टॉक अबाउट EMI, इकोनॉमी मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर जो बात करेगा, ऐसे स्पीकर को हम इनवाइट करते हैं एवरी फर्स्ट थर्सडे. एंड एवरी सेकंड थर्सडे वी इनवाइट अमॉन्ग हमारे जो मेंबर्स है, जो हमारे कम्युनिटी में, जो हमारे फ्रेंड्स से जो यू नो लाइक फ्रॉम जीरो टू हीरो बना है, जो छोटे से जगह से बड़े काम अचीव किए हैं, आपके जैसे लोग जो सक्सेस अचीव किए, वैसे लोगों को आके उन्होंने वो सक्सेस कैसे अचीव किया, हाउ दे हैव अचीव्ड दैट सक्सेस, उनके सक्सेस जर्नी, उनके सक्सेस स्टोरीज, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज किया है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, वो आके शेयर करते हैं एवरी सेकंड थर्सडे ऑफ द पाठशाला. You should know if you're in पाठशाला कि हमारे यहाँ पे क्या होता है. So every second Thursday like this, हमारा ब्रिजेश दर्जी है दावोस से, गुजरात से, जिन्होंने 1500 पर मंथ का इनकम है. Yes, now 15,000 per month. No, it's not 1,50,000. Sorry, 15 lakh per month. 15 lakh per month इनकम, या 1500,000 कुछ उन्होंने बताया था, 1500,000 पर मंथ का इनकम में पहुंचा है दावोस से. So started 15,000 से 15 lakh a month as mutual fund distributor. So this is ये shared in this, आप listen to इस वीडियो, जो रिकॉर्डिंग देखिए, उन्होंने पूरा उनके जर्नी में क्या क्या था, क्या क्या किया, एंड हाउ he has reached that 1500 से आज 15 लाख रुपीस पर इनकम में कैसे पहुंचे विद इन 15 about 15 years में. Next we called नितिन पटेल again from गुजरात, जर्नी ऑफ 1000 crore AUM. अब 100 करोड़ में आप खुश नहीं होते हो ना, तो 1000 करोड़ के पर्सन क्या क्या किया कि 1000 करोड़ में पहुंचने के लिए. एंड सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने 99 में शुरू किया, फर्स्ट 100 करोड़ अचीव करने के लिए इट टुक 17 इयर्स. इन 2016 he achieved his first 100 crores. Look at the next 900 crores is he exceeds now 1500 crores बोल रहा है, so I'll have to check the number. So yeah, 1500 crores ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स हो चुका है उनका विद इन नेक्स्ट 8 years में. दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिस बिजनेस में हम. ये कैसा किया, पूरा अपना स्टोरी, अपना स्ट्रेटेजीज वो डिस्कस किया उस वीडियो में. गो बैक एंड वॉच दैट रिकॉर्डिंग अगर आपने मिस किया है तो. ओके, सो दिस इज द सेकेंड सेशन व्हाट वी डिड. एंड देन एवरी थर्ड वीक में हम SIP का कॉन्सेप्ट है, लाइक यू नो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं, वहां पे साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग प्रोसेस, हमारे इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं इसके ऊपर. तो उसमें धर्म सर, करंट सर, ऐसे लोगों को हम इनवाइट करते हैं इसमें. सो धर्म सर आके उन्होंने पूरा एक हाउ टू शो द वैल्यू ऑफ द MFD, जैसे अभी वट एवर आई एम टॉकिंग उसमें अलग अलग आइडियाज कॉन्सेप्ट बात करते हैं धर्म सर. सो धर्म सर ये सारे टॉपिक्स कवर किए होते हैं, बहुत सारे की एक्रोनिम्स दिए होते हैं, जैसे TTT, RRR, MMM, PPP, WW. वो क्या है ये सब आपके सामने, बट टेक्निकल लगेगा इफ यू हैव नॉट अटेंड दैट सेशन. गो बैक एंड वॉच द रिकॉर्डिंग. टू मार्केट थ्योरी, एंड आपका मेन फोकस होना चाहिए कि लोगों को हैप्पी लाइफ क्रिएट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कराने के बारे में फोकस करना है by adding income or creating passive income. Okay, and then we are a guardians of the wealth. लोगों का क्लाइंट्स के लिए गार्डियंस है. अगर धर्म सर 2 मिनट के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा. धर्म सर, आर यू देयर? Yeah, I'm there. Yeah, please, would you like to share something? No, I think we are listening to you. Please continue. Okay, so ये आपका टॉपिक है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हो. Let them watch the recording. It's a long topic. Yes. So बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया, ये सब धर्म सर ने इसमें कवर किया हुआ है. सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो बैक एंड वॉच दिस रिकॉर्डिंग अगर आपने मिस किया है तो. ओके, सो धर्म सर, जो मैं बोल रहा हूँ अबाउट लाइक जो भी हम जो इसके ऊपर, यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट कॉर्पोरेटेशन फ्यूचर ये सब के ऊपर? I am only requesting people to take this seriously, not take it lightly. Sometimes what happens is any business which looks too good, and actually if you see in the last 5-6 years, everybody says MFD is a great business.
because you earn trill income. Money comes automatically. Now, anytime anything in life becomes very easy and very attractive, na, you have to be very careful to guard it. And this one rule that has quietly come in, this shifting of the assets, you can like changing the ARN. This is very quietly this rule came. Most people thought that it is a great idea. I can get business from somebody else so easily. But I think it is more of a risk than I think return. Money can slip out. So we are thinking we'll get somebody else's money, but actually the biggest risk is to our own money. A client earlier could not get out because of the hefty capital gains tax that they had to pay. They could not get out of it. But today, it is very easy to get out, and this capital gains tax is not at all a problem anymore. So these are the things that you have to bear in mind, that whenever a business becomes very exciting, you have to guard that business. And this is a small rule that came. I think people haven't realized how potent it is. It is going to cause havoc in the market. Bankers have a lot of people, lot of money. They can take a lot of losses. They are going to go out and influence people. And that's the reason you have to ring fence your business. You have to treat it like a business. You have to treat it like a brand. Those days are gone when, this was one business. People never realized it's a good business. Aram se hum log kama rahe the. Today, even very educated people want to get into this kind of a business. So I think as Swamy sir said, we are doing this workshop in Bangalore for about 3 to 4 days. Those people whose business has grown and you want to ring fence your business, I think you should be part of it. Yes, thank you, them, sir. So next, on 18th, we have on 18th we covered this topic, very important. आजकल many people have crossed 100 crores and जिसका भी 100 crores हुआ है उनका ड्यू डिलिजेंस ऑडिट हो रहा है, और इसके ऊपर पूरा प्रेम सर एंड प्रवीण आके पूरा ड्यू डिलिजेंस का उन्होंने जो एक्चुअल जो उनका ऑडिट हुआ था, तो क्या क्या पॉइंट उन्होंने चेक किया, क्या क्या वो फॉर्म्स में क्या क्या क्वेश्चन था, क्या प्रोसेस था, क्या टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन लगा, व्हाट काइंड ऑफ एरियाज दे वर चेकिंग, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स एरियाज, क्या क्या चीज में फोकस करना चाहिए, सारे चीजें डिस्कशन की है इस टॉपिक में. सो दिस आर ऑल द टॉपिक्स दैट इज कवर्ड इन दैट. इफ यू मिस्ड इट, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग. Okay, so this is we covered on the due diligence जो से एम्फी का जो ऑडिट हो रहा है कॉम्प्लायंस के ऊपर. ये अगर आप 100 crores के ऊपर हो चुका है, इवन अगर उससे इवन इफ यू नॉट बिकम 100 crores का कैसे लिया जाता है कि यू माइट बी थिंक टुडे आई एम नॉट 100 crore, आई कैन गेट अवे. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, when they come for the auditing, they come last 3 years 5 years. कोई भी क्लाइंट का उठा के उनका पूरा प्रोसेस चेक करेगा, वो 5 years का पहले का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं. So even if you are at the beginning, you should follow these practices now only. And again, we are going to cover this topic in that also, like best practice. We have given the recording already दिया हुआ है, भेज दिया. In fact, in इसके अलावा भी अब संजय खत्री सर का सेशन आया था, उन्होंने भी पूरा डिटेल में about this best practices क्या follow करना चाहिए, so that जो भी ये auditing ये सब आएगा उसको how you can be compliant, उसके ऊपर पूरा उन्होंने सेशन कवर किया हुआ है. So that is also there. So please watch it. Next. After that, so budget came. So budget के बाद Vijay Mantri sir is the best person. So Vijay Mantri sir in that session not only give the old regime, new regime, capital gain taxation on equity, debt, gold, all other asset classes, everything he covered. Real estate, all the impact of the budget क्या होगा, उसका भी outcome के बारे में बताया. Not only that, he discussed about the market क्या level पे था, या क्या focus करना चाहिए, market में return कैसा आता है, profit book करना चाहिए क्या budget की वजह से, everything he discussed in that session. Okay, so this is very important session, you should watch here. But one point ध्यान रखो यहाँ पे, again budget का आया हुआ है और tax का point है. मैं भी उस दिन धर्म सर से I was talking to Dharam sir, like many of you are not aware. 3 things you should be aware in this topic. पहला thing, if your client is earning about 4 lakh rupees per month income, उनका अगर 4 lakh plus per month income है, that means he is reaching close to 50 lakhs का income. Okay, हम लोग को लगता है सिर्फ कैपिटल गेन करके 12.5% टैक्स है करके, बट अगर ये because by adding the capital gains income to the normal income, if the client income crosses 50 lakhs, now let me tell you friends, there is an additional 10% surcharge
जिसकी वजह से क्लाइंट का 1 से 2 लाख रुपए का टैक्स बढ़ सकता है। आपको लगता है अरे 5 लाख का मैंने रिडम्पशन किया है, 5 लाख का कैपिटल गेन है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि 12.5% में लगा था, इट इज हार्डली 60-70,000, 5 लाख के ऊपर 12 से 60-70,000 का टैक्स है करके। नो, योर एक्चुअल टैक्स अगर इस सिचुएशन में बॉर्डर लाइन पे है, जब रिटर्न फाइल करने थे क्लाइंट को पता नहीं, आपने रिडम्पशन कर दिया, यू आर नॉट इन्फॉर्म द क्लाइंट, एंड जब रिटर्न फाइल करने तो सीए क्या बोलेगा पता है, सर आपका कैपिटल गेन इनकम की वजह से इतना टैक्स भरने को आ रहा है। अरे क्या टैक्स लग रहा है, 12.5 तो 70,000 होना चाहिए, मेरे को 2 लाख क्यों भरने को आ रहा है? 2 लाख इसीलिए बिकॉज ओवरऑल इनकम पे 10% का सरचार्ज लगा है। सो बी माइंडफुल अबाउट दिस, मेनी पीपल आर नॉट अवेयर। वाइल आप रिडम्पशन करते समय चेक करो क्लाइंट क्या टैक्स ब्रैकेट में है। इफ द क्लाइंट का अगर 50 lakhs to 1 crore पे 10% का एडिशनल सरचार्ज लगता है, 1 lakh to 1 crore to 2 crores के बीच में एडिशनल 15% सरचार्ज लगता है, एंड 2 crores के ऊपर है तो 20% सरचार्ज लगता है ओवरऑल टैक्स पे, नॉट जस्ट ऑन कैपिटल गेन टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसको ध्यान नहीं रखते। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ यू हैव एनआरआई क्लाइंट्स, वी डोंट इन्फॉर्म द क्लाइंट्स, लाइक क्लाइंट विड्रॉ करते हैं सपोज 1 crore, उनका 20 lakhs टैक्स काट के पैसा मिलता है, 80 lakhs मिलता है। यू आर नॉट एजुकेटेड द क्लाइंट, यू आर नॉट इन्फॉर्म द क्लाइंट, देन यू गेट annoyed, यू गेट एंग्री। क्यों? टीडीएस कट गया, बताया नहीं था सर, वो तो लगता ही है, पहला क्यों नहीं बताया था आपने? एंड ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, यू कैन टेक इट इन पॉजिटिव आल्सो, बाय एक्सप्लेनिंग, बाय एजुकेटिंग दिस पॉइंट्स, यू कैन होल्ड द रिडम्पशन, you can postpone the redemption, you can defer the redemptions. These are all strategies you should be knowing as a finance expert अगर आप क्लाइंट के पास कर रहे हो तो। The second point, the third point जो टैक्स के रिगार्डिंग जो ध्यान रखना है कि आप लोग सब रिडम्पशन बड़े बड़े रीबैलेंसिंग करवाते हैं, रिडम्पशन होता है, ऐसी इट्स आवर ड्यूटी टू टेल द क्लाइंट सर प्लीज पे द एडवांस टैक्स। 50 लाख का रिडम्पशन हुआ है, 10 लाख का कैपिटल गेन है, 20 लाख का कैपिटल गेन है, 1 करोड़ का रिडम्पशन हुआ है, अगर 30-40 लाख का कैपिटल गेन है, 50 लाख का कैपिटल गेन है, 6-7 लाख का टैक्स आएगा। अगर उसने एडवांस टैक्स नहीं भरा, इंटरेस्ट लगेगा, एडवांस टैक्स का पूरा स्टार्टिंग से लेके इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, वो इटसेल्फ बड़ा अमाउंट होगा। हाउ मेनी ऑफ यू इन्फॉर्म योर क्लाइंट्स दैट यू हैव टू पे एडवांस टैक्स 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च को? अगर ये सब बड़ा रिडम्पशन हो रहे हैं तो बी माइंडफुल, बी माइंडफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्पेशल एचएनआई क्लाइंट के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो। एंड क्लाइंट एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो एंड यू शुड इन्फॉर्म। सो दिस इज द टैक्स का जो टॉपिक में जो 3 पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट, जो आपको ये ध्यान रखना चाहिए इन प्रैक्टिसिंग डीलिंग विथ योर क्लाइंट्स। And then we have every fourth Thursday of the Pathshala, we have this booklet guide. Every month एक बुक का एनालिसिस होता है, पूरा बुक समरी यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है इस सेशन में। सो बुकलेट गाइस है, सो पूरा बुक का एक एनालिसिस होता है। इट्स लाइक रीडिंग वन बुक एवरी मंथ, जस्ट इफ यू आर पार्ट ऑफ द पाठशाला। ऐसा तो पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, सो बाय अटेंडिंग पाठशाला यू कैन रीड वन बुक एवरी मंथ विद द हेल्प ऑफ अमृत देशमुख, a booklet guy who is on a mission to make India read. These are all the points he covered from that book. That sounds fun. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, पता है, ये बहुत की लेसन है जो आपको लर्न करना चाहिए, पता रहना चाहिए। एंड इनफैक्ट ये जो लेसन हम आपको शेयर भी करते हैं आफ्टर द पाठशाला। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पेइंग अटेंशन टू इट। अगर आप पाठशाला मेंबर है, आपको ये लेसन भी आपको शेयर किया जाता है, जो की लेसन फ्रॉम आफ्टर ईच एंड एवरी सेशन। Okay. Next, again in the next success segment, we called Bobby Agarwal from Ambala, जो जिसने एक जो सीए करना चाहता था, बट वो छोड़ के उन्होंने सीए कर नहीं सकते, किसी ने उन्होंने बोला उनको, इसलिए फिर वो ज्वाइन दिस इंडस्ट्री एंड विद इन अ शॉर्ट ही बिकम 200 crore AUM अंबाला से। तो उसका जर्नी, उन्होंने कैसे वो जर्नी अचीव किया, पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, प्लीज वॉच। And then दुर्गेश बाबरिया फ्रॉम एक छोटा सा विलेज से आके हाउ ही हैज रीच्ड 500 crore AUM, हाउ ही हैज अचीव्ड 500 crore AUM। 2009 में इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, 2019 में उनका 100 crore हमारा यूएफपी ज्वाइन किया था, तभी उनका हमारा यूएफपी प्रोग्राम 2019 में उन्होंने फिजिकल गुजरात से ट्रैवल करके आते थे मुंबई अटेंड करने को, पाठशाला को भी अटेंड करने आते थे मुंबई गुजरात से।
उस समय में उनका 100 करोड़ का यूएम था एंड टुडे इज 500 करोड़ प्लस विद इन मैटर ऑफ 4-5 years में उन्होंने 500 करोड़ अचीव किया. वो कैसे अचीव किया ये पूरा डिस्कस किया है उस वीडियो में. प्लीज वॉच दिस. नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल. जैसे बांग्लादेश का न्यूज आया इमीडिएटली हमने करण जी को याद किया बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो जियोपॉलिटिकल मैटर्स में ही इज द एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट. सो वी कॉल्ड हिम एंड वी डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नॉट ओनली बांग्लादेश, इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड इंडियन मार्केट. Also he discussed about all the wars world that's going on, silent wars happening, violent wars that are happening, everything he discussed. These are all he mentioned what kind of wars we are facing nowadays. And almost every month we are facing one or the other type of war. Many types of wars are happening, and what should be our strategy, how we should have our investment strategy phased out or planned for our clients. So he discussed about this topic. So if you missed this, please watch the recording. And then again, last week we had a booklet guy once again with conscious business. Again, there are key important lessons from that. The business के directly related. Last वाला that sounds fun or more related to the personal, but this is more related to the business. So conscious business ideas जो उन्होंने डिस्कस किया है, जैसे वैल्यूज होना चाहिए, वैल्यू ड्रिवन बिजनेस होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर रहना चाहिए, आपके कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन, देन अपॉर्चुनिटी वर्सेस डिस्ट्रैक्शन. सो ऑल दिस थिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसमें कवर किया हुआ है. सो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग. अगर आपने मिस किया है तो दिस आर द लर्निंग्स फ्रॉम दैट बुक जो उन्होंने लास्ट वीक में कवर किया हुआ था. सो दिस इज द रिकैप ऑफ आवर एंटायर लास्ट 2 months पाठशाला. Okay, so this is a recap of all the learnings of the last 2 months Pathshala. So we have come to the end, and before we end, would like to run one poll quickly. Some of you have a guest also or not, या फिर हमारे अपने करंट जो पाठशाला प्रो मेंबरशिप रिन्यू नहीं किया, अगर आपको लगता है ये सारे बेनिफिट्स, आप पाठशाला लैंडिंग पेज में जाइए, nextlevel.in वेबसाइट में पाठशाला पेज में जाइए. अगर आपने पाठशाला अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आपने रिन्यू नहीं किया है, प्लीज डू इट इफ यू फाइंड वैल्यू इन व्हाट वी आर डूइंग. If you think if you don't find value, no problem, but go through everything that we are offering. There are many apps, lot of things we are offering. So not just only the sessions that we are giving. Session is just the education part we are doing. Beyond that, many things that we are doing. So visit our nextlevel.in website, and if you are not yet renewed your Pathshala membership, please visit. And there's a special coupon code. And also answer this poll so that if anybody required any clarity or anything, we can reach out to you. Please answer this poll. Even if you're already Pathshala member, please answer this. There's a coupon code. Malti, can you put the coupon code, the link to the benefit? अगर किसी ने नहीं किया तो FP Pro. What is the coupon code? FP Pro 2425. हाँ, FP Pro 2425 अगर अप्लाई करोगे वेबसाइट में जाके, लैंडिंग पेज में, पाठशाला पेज में जाके, you will get 2,100 rupees फ्लैट डिस्काउंट. ओके, आपका फीस में से 15,000 का फीस है, उसमें से 2,100 माइनस करके 12,900 प्लस GST का आपको आएगा. So please use that coupon code if you want to renew or if you want to subscribe to the Pathshala membership. In case if you have not done, if you have missed it, okay. And tomorrow we are doing this time value of money Excel foundation course का introduction कर रहे. Last week some of you have attended. If you have missed, tomorrow 7 o'clock we have the free master class on time value of money on Excel. So if you are interested, we will be sharing the link on all the groups. So please